हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और बहुत सारे बच्चों को होता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हो। तो इस चैप्टर को हमने 4 अलग अलग क्राइटेरिया में रखा हुआ है ताकि हर बच्चे को ये हर लैंग्वेज में समझ में आए। तो पहले तो ये रीडिंग करके हमारे टीचर्स आपको बताएंगे, तो रीडिंग का पूरा वीडियो आप देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको रीडिंग समझ में आए। उसके बाद में आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। फिर आप मराठी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो मराठी में भी जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा। साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप नॉन मराठी हो लेकिन आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, प्लीज आपको भी मराठी में ये चैप्टर देखना चाहिए ताकि आप मराठी भी समझ पाओ। और उसके साथ साथ में यही चैप्टर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो लेकिन ये होता है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश तो हिंदी समझने में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हो बच्चों। तो प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है। नए नए वर्ड्स आपको वहां पर सीखने मिलेंगे और आपको किस तरीके से सो हाउ बेसिकली यू कैन speak in English and you can understand every word and the sentences flow, right? So please, if you listen to English explanation, then definitely you don't have to by heart your question answers, you can write it very effectively. अगर आप English explanation सुनते हो और अपना वीडियो English explanation में बना करके भेजते हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन राइट ऑन योर ओन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम ऐसी पढ़ाई आपके लिए करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को एंड तक देखिए। हमने एक पूरा ऐसा मेथड बनाया है जहां पर आप बच्चे जो है इस चैप्टर को देखोगे, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सारी चीज़ों को। और आप अगर हमारे साथ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे तो आप यहाँ पर कुछ प्राइजेस भी विन कर सकते हो। आपके सारे चैप्टर्स एवरीडे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो तुरंत से अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज एक सब्जेक्ट का आपके सिलेबस का एक वीडियो आपको मिले यहाँ पर, और आप जो है उसे सही तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ पाओ, राइट। सो आपको एंड में मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा कि किस तरीके से कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन से वीडियोस आपके सामने आएंगे, राइट। सो उस वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। और हम जो है इस सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्सनलाइज्ड मैनर में आपके लिए तैयार करके रखे हुए। बस आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है और आगे बढ़ना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। Hello students, welcome to the Smart World, the School of Complete Education. Today's topic is evolution. 4.1 the concept of evolution, 4.2 the stages of evolution of animals, and 4.3 apps. The concept of evolution. The word evolution is generally understood to mean gradual and continuous change. Okay, the evolution, that words means continuous change. That means we may for example, you are in 2 years old, you may like a little girl or a boy. Now you are grown. Okay, likewise the continuous change, that means evolution. Evolution in the plant and animals world can expand in the following manner. In the process of survival, by adapting to environmental changes, certain internal physical changes occur in some animals of a species. Okay, the plant and animal world, that can be evolution means can be explained in the form of the process of survival of animals and plants by adapting the environmental changes and certain internal physical changes also. Okay, likewise it can be changed over a period of time. These internal changes would become inherited
characteristics seen in all following generations. Okay, these are some of the characteristics which can be seen in following generations also. Adaptability is a main purpose uh, to live in any kind of places. Okay, thus a new species with characteristics different from the original may be created. New species with characteristics different from the original may be created. Such a species is usually more evaluated than the original one. Okay, the species is may be differented. Okay, it may be changed from their original one to the adaptability. Okay, so it can be changed from original one to original one. Okay, sometimes the original species dies out or becomes extinct. Sometimes it may be the original one may be died. Sometimes more than one species evolve from the original one. Sometimes more than one species may evolve from the original one. Okay, the first scientist to give us a systematic explanation of the concept of evaluation was Charles Darwin. This is an important one. The first scientist to give a explanation of the concept of evaluation, Charles Darwin. Okay, species which are capable of adapting to environmental changes are able to survive, and that's why we may told in the first paragraph. Likewise, the person or a animal or a plant that can be able to adapt the environmental changes, they are only able to live in that society. Okay, the ones that cannot do so become extinct in the process of evaluation. That cannot one maybe any of them not do like that, means they have been separate from the society. Likewise, in ancient times there were many species of a type of animal called dinosaur. We may know that dinosaurs were lived in this century. We may saw many movies like Jurassic Park. Likewise, we may saw that. So Dinius in Greek means terrible, and Saurus means lizard or reptile. Reptile, you may know that it may be lived in the land. Likewise, we may know that. So reptile in Greek word, it is a terrible and lizard. Likewise, so dinosaur means a terrible lizard. So this is a picture of the animals, dinosaur, various species of dinosaur. Okay, for an example is the evolution picture, which describes a evolution of a one cellular organism to a multicellular organisms. Likewise, this is a protozoa. Likewise, earthworm, and then sorry, octopus. Likewise, this is a species. This is a species and birds and animals. So this is an example for the evolution of animals. So go to the lesson. So you may saw that the evolution of the animals. Now some of the dinosaurs are very enormous in size. They are very large in size. Likewise, enormous means large. Okay, it appears that these species of enormous dinosaurs suddenly become extinct. Okay, these may be suddenly made died also. Some sudden natural disaster or environmental changes is believed to be responsible for their extinction, and they are died because of some natural disaster. It may be a earthquake or a volcano. Likewise, some sudden natural disaster or a environmental change, it may be died. Okay, fossils of a dinosaurs with wings have been discovered. Archaeologists or scientists may discover that the fossils of a dinosaurs with the wings also they have discovered from the earth. Okay, it is believed that some species of two-legged and winged dinosaurs. Okay, this picture was resemble that two legs and the wings also. Likewise, this picture will resemble that. These are the things also. Sorry, these are the animals which may be extinct in that maybe 1,000 or 2,000 years ago. Likewise, our scientists may discover that the skeletons or bones of that species. Okay, 4.2, the stages of evolution of animals. We have learnt in the previous lesson that life on the earth began with a unicellular organism like a protozoa. You may saw in the third lesson, what is that? Life on earth began with the unicellular organisms. What is called? That is protozoa. Okay,
This unicellular organism gave rise to multicellular things. Likewise, I gave some example now only. It gives unicellular to birds or a species or animals likewise. So these are the unicellular and converted into multicellular organisms likewise. So various classes of plants and animals came into being. The following are the stages of evolution of animals. First of all, invertebrates. Animals without a backbone is called invertebrates. The example is called snail. Okay, animals without a backbone. Okay, that is called a snail. The snail didn't have a backbone. Okay, vertebrates. Animals which have a backbone are called vertebrates. Okay, the example is called aquatic animals means fish and amphibians means frog. These are amphibians means they are living in land and also water. Okay, these are called amphibians. For example, tortoise likewise. Okay, so in this vertebrates means the example is called frog. And then birds. Okay, reptiles means animals which crawl. For example, a snake. Okay, mammals, a cow. These are all have a backbones. They are called vertebrates. The animals which cannot have a backbone is called invertebrates. Okay, you may now clear I so. Okay, then mammals. Mammals are the most evolved animals among vertebrates. Vertebrates means they have a backbone. So mammals, that means evolved animal. It has a backbone. So it is called as a vertebrates. The following are the characteristics of most of the mammals. Mammals, okay. The characteristics. What are the characteristics? Growth of a baby in the mother's womb for some time before birth. Okay. The child or a baby that may be in a mother's womb only. Okay. These are the mammals. And in second point, the baby is feed on the mother's milk for some time after birth. Likewise, a human, they have been feed from the mothers. Okay. The platypus and some species of anteater are exceptions to this. So some of the mammals are also some of the species are also exceptions to this, are a platypus and the anteater. Okay, these are the exceptions for the mammals. Okay, they are considered mammals because even though they lay eggs, they suckle their young ones. Okay, they are also considered as a mammals, but they are not. They may lay eggs, but they are not included in this topic. Okay, apes are somewhat like humans in appearance. Apes means they are, though this is an example, one sec. So these are called apes. They may look like a human. Okay, this is a apes. This is an example. Okay, you may saw that apes. Okay, now ape are look like a in human appearance likewise, no. So they are lived in the trees. Those species of apes which continue to live on trees retain their original ape-like form. Okay, they lived means they look like a they may convert their life into the live in the tree only also. Okay, however, in grasslands some ape species were forced to move around the ground. Okay, in grasslands they are forced to move to the ground. Okay, these species evolved gradually and in time gave rise to the human species. We may note that the evolution of a human may come from the monkey. Likewise, we may get some informations in our childhood. Likewise, the apes are the ancestors to are the human beings. Okay, and then this happened first on the African continent. The first human species is the primitive man. Primitive means a first. So okay, these are the things which have been happened in the African countries. Now the first human is known as a primitive man. Primitive means a first. Okay, in the next lesson we shall more about evolution of the human species. Okay, this is the fourth lesson. And then first systematic explanation of the concept of evolution was given by Charles Darwin. Dash are the most evolved animals among vertebrates. Most mammals. Okay, these are the answer for the questions. Answer each question in
one sentence. What do we call animals which live in water and also on land? And also on, this is the answer in page number 16, amphibians. Okay, answer for this question is amphibians. Where did the first humans appear? Where does the first human is appear means answer in page number 17, and the answer is African continent. Okay, give reason for the followings. This may be told by your teachers, and then fill in the blanks in the concept chart given below. Evaluation of animals, living things. Animals without a backbone is called invertebrates. Vertebrates, animals with a backbone. Okay, worms, mosquito, and then some examples may given snail, likewise visa, and then aquatic animals, reptiles, cow, mammals, likewise these are the example for the vertebrates. Make a model of a dinosaur. This is an activity for you and a project. Collect the pictures of invertebrates and vertebrates. Okay, stick them in a notebook and write down their characteristics. Okay, likewise we may do that project. And do you know, in the year 1859, Charles Darwin proposed his theory of evolution in the book on the origin of species. Okay, Charles Darwin, he is a first systematic explanation of concept of evolution was given by him only. Before Darwin, the scientist Carl Linnaeus had has introduced this method of classifying animals. He only noted that the humans evaluation. Okay, he had expressed the opinion that going by the structure of the body, the human species and some ape species appear to be related. He only structured the body of the human which can be related to the apes body. Okay, in his first book, Darwin had not expressed any definite opinion about his relationship. In 1871, he published his second book, The Descent of Man. In this book, he drew attention to the fact that even though humans do not have a tails, the last bone of their spine is a vestige of a tail. He also noted that some other non-functional or unnecessary structures in the human body, such as the wisdom teeth, are indicators of the process of evaluation. He may noted that in the second book of his, he may noted that the some things that are not related to that, but the tail and likewise. But again, he inverted some things, the wisdom of the teeth, likewise. He may later that okay, this is a evolution of a human from the apes only. Likewise, he accepted the inference that the humans have evolved from the tailless apes like the gorilla and the chimpanzees that lived in the jungles of Africa. However, no evidence had been found till then in support of his theory. The necessary evidence became available only in the 20th century. Okay, on that time they may not get the evidence because of some issues. Likewise, and after the 20th century only they get the evidence from that. So according to his theory, he may told that the human may evolve from the chimpanzees and apes, gorilla. Likewise, we may evolve from that only. Likewise, he told. Okay, thank you. स्टूडेंट्स, अगर आप सही तरीके से अपने वीडियोस यहाँ पर हर रोज भेज रहे हो, आपके चारों वीडियोस आ रहे हैं, तो हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम यहाँ पर आपको देंगे, राइट। और मंथली अगर आप कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस हमें भेज रहे हो और चेक हो रहा है, और जो भी बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करेगा पूरे मंथ में, उसे एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा। सो प्लीज़ आपके गिफ्ट के लिए नहीं, आपके एजुकेशन के लिए, और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो भी फ्री में, राइट। सो प्लीज़ आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, आपको अच्छे तरीके से हर रोज़ वीडियोस को सुनना है और अपने वीडियोस बना करके अच्छे से अच्छे तरीके से भेजना है, राइट। अभी आपको मैं कुछ सच्चाई बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर ये स्कूल में आप क्या कर रहे हो, राइट। 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो। ये है ट्यूशन आपका,
ट्यूशन में भी यही हो रहा है, 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में आप बैठे हो। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं। सबकी बातें, हर बात सबके लिए नहीं सुन सकते हैं वो, राइट, और उनको ग्रेड भी नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि स्कूल नहीं बराबर करता या ट्यूशन्स बराबर नहीं करते, प्रॉब्लम है वहाँ पर, वहाँ ज़्यादा बच्चे एक साथ आने की वजह से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना प्रॉब्लम है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने समय पे सारे वीडियोस बना करके, सीख करके मुझे भेज सकते हो। हमारा टीम आपके सारे वीडियोस को चेक करेगा और जो टाइम बैरियर है मल्टीप्लाई हो जाता है। आप अपने टाइम पे काम करते हो, टीचर्स अपने टाइम पे काम करते हैं, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में आती है, आप कितना अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये सब कुछ समझ में आ जाता है। आपका पढ़ाई इंप्रूव होगा बच्चों, आप जब सारी चीज़ों की रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्लेनेशन, राइट, सो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे धीरे धीरे तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप बहुत अच्छे से हर चैप्टर को समझ पाओगे, हर लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके समझने में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की तरफ आप जुड़िए और उसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है आपको। ये जो वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट किया जाएगा, नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करिए, वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, उस लिंक में जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिलअप करिए। उसके बाद में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से आपको लॉग इन करना है, किस तरीके से आपको जो है सीखना है, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने और हमें भेजना है। थोड़ा 1-2 दिन परेशानी होगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, हमारे टीचर्स आपको फॉलो अप करते रहेंगे, वो हेल्प करेंगे आपकी जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो। और फिर हर रोज़ डे में आप पूरा जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है टाइम टेबल के हिसाब से उस वीडियो को आप सुनोगे, वो सारी चीज़ें आप करोगे। करने के बाद हमें वीडियो भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे और शाम को आपका रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास होगा। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा और तब जाकर के आपकी मदद हम कर पाएंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूँ कि आप हमसे जुड़ोगे और ये चैनल सबके साथ शेयर करोगे ताकि आपके सारे दोस्त जो है इस चैनल पर आए और आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस चैनल पे सीखो और एक दूसरे के ग्रोथ को भी चेक कर पाओ, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पे ऐसा पूरा पोर्टल में सिस्टम दिया गया है कि आप अपने दोस्त के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका दोस्त कितना अच्छा कर रहा है। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को जोड़िए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।